Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor नीलेश आनंदवाणी, MSc PhD in Biology. आज मैं आप लोगों को एक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा हूं जो कि यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है और यूनिट नंबर जो होगा वो है 3rd प्लांट किंगडम. Now in this there are 8 tests, but in this lecture I am going to conduct the test number 1. So let's start. Question 1. Which one of the following is wrong about Chara? Yes. So upper oogonium and lower round antheridium. This statement is actually correct. Globule and nucule present on the same plant. This one is also correct. Upper antheridium and lower oogonium. Upper antheridium and lower oogonium. Let's see other. And globule is made reproductive structure. I think so C will be correct answer. Yes, C is correct answer. Select the wrong statement. Isogametes are similar in structure, function and behavior. Anisogametes differ in either structure, function and behavior. ये दोनों तो सही है. In oomycetes, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. Male gamete most probably कभी larger होता ही नहीं, तो ये वाला गलत है. Chlamydomonas exhibit both isogamy and anisogamy, and fucus shows cogamy. C will be the correct answer because this is wrong statement. Yes. Male and female gametophytes are independent and free living in. Male and female gametes are independent and free living in. So I would say sphagnum will be correct answer. Yes. Which of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Isogamy with non-flagellated gametes. So here I will say answer should be the Spirogyra. Yes. Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and Protonema mosses? ये तीनों के बारे में कॉमन क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. फंजाई में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होते हैं. मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, दे ऑल आर नॉट एक्चुअली मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, लाइक फंजाई आर नॉट मेंबर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है बिकॉज सम आर प्लांट एंड सम आर फंजाई. एंड मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, सो यस ये करेक्ट आंसर है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ही होता है इनमें. Question number 6. Compared with a gametophyte of the bryophyte, the gametophyte vascular plant tends to larger but have a smaller sex organ, larger but smaller sex organ. No. Larger and have a large sex organ. Let me think. No. Smaller and to have a smaller sex organ. Yes, this can be the correct. Smaller but have a larger sex organ. No. Smaller and to have a smaller sex organ. Yes, C is correct answer. Question number, which one of the following have a vascular cryptogam? Now vascular plant means which have a xylem and phloem, plus cryptogam means a spore producing plant. तो इसका एक ही एग्जाम्पल हो सकता है टेरिडोफाइट्स. और टेरिडोफाइट में कौन सी कैटेगरी आती है इसमें? जिंको बिलोंग्स टू दी जिम्नोस्पर्म, जिंको बायोलोबा विच इज़ अ लिविंग फॉसिल. मर्चेंशिया, सिड्रस, यहाँ पे इक्विसिटम आंसर आना चाहिए. यस, because Merchantia is not a pteridophyte, it's a bryophytes. Citrus is a one type of algae, I think. Question number 8. Cycas and Adiantum resembles each other in. Cycas और Adiantum में दोनों में कॉमन क्या है? दोनों के सीड कॉमन है? नहीं. मोटाइल स्पर्म, उनके स्पर्म, यस इनके स्पर्म दोनों के मोटाइल हैं. कैम्बियम vessels, no. Motile sperm will be the correct answer. Yes. Gymnosperms are also called softwood spermatophyte because they lack. क्या नहीं है जिम्नोस्पर्म में? कैम्बियम, no. Cambium is present in gymnosperm. Phloem fibers are also present. Thick walled tracheids, yes, thick walled tracheids are also present. Xylem fibers are not present in the gymnosperm. D, yes, D is correct answer. Question number 10. Which of the following is correct statement? Pteridophyte gametophyte has protonemal and leafy stage.
Which one of the following is correct statement? Pteridophytes. Gametophyte has a protonable and leafy stage. No. This is found in sporophyte. In gymnosperm, female gamete is free living. No. Antheridiospore are present in pteridophyte. Let me see the D one. Origin of seed habit can be traced in pteridophytes. Yes, seed habit traits can be traced. Yes, D will be the correct answer. Male gametophyte with the least number of cells is present in. Male gametophyte with least number of cells present in Pteris, Funaria, Lilium, Pinus. I'm in little bit of confused about Lilium and Pinus, but no, Lilium will be correct answer. Yes, Lilium is correct answer. Question number 12. Which of the following is responsible for pit formation? तो पिट फॉर्मेशन किससे होता है? सो बेसिकली पिट फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये स्पैग्नम से होता है. यस, स्पैग्नम, ये तो कॉमन चीज़ है एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 13. अलगी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ. सो बेसिकली अलगी के सेल वॉल अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो क्लियरली पहला सेंटेंस दिया हुआ है. अलगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 14. Prokaryote autotrophic nitrogen fixing symbiote is found in. So, prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiote found in. So, I would say answer of this question will be Cycas, Cirrus, Pisum and Inus. Cycas will be the correct answer. Let's see, but yes, Cycas is correct answer. Question number 15. Mannitol is the correct food in. So actually mannitol, laminarin, floridin, starch are the type of pigment found in algae, but here mannitol is a reserve food material found in the fucus which belongs to the brown algae. Yes, it's correct answer. Question number 16. Beside paddy field, cyanobacteria are also found inside the vegetative part. They are found in Testa, Cycas, Equisetum and Scutellum. So it's a little bit of a confusing one. Here answer will be Testa, Cycas, Equisetum and Scutellum. So I would say Cycas. Yes, Cycas is correct answer. Read the following statement 4 and answer the question which follow them. In liverworts, mosses, fern, gametophytes are free living. This actually correct statement. Gymnosperms and some ferns are heterosporous. This is also correct. Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is a oogamous. They all are actually type of algae. The sporophyte in liverworts is more elaborate than the mosses. This is actually vice versa statement. So I would say 1, 2, 3 statements are correct. Yes. Question number 18. Archigoniophore is present in. Archigoniophore is present in Chara, Adiantium, Funaria and Merchantia. So here I'm confused about Merchantia and Chara, but I would say Merchantia will be the most correct answer. Let's see. Yes, Merchantia is correct. Question number 19. An alga which can be employed as a food for human being. So human being के लिए food generally इनमें से कौन सी है? Chlorella.
So chlorella is a green algae which can be used in a space traveling also. जब स्पेस में फ़्लाइट वगैरह उड़ते हैं, अगर ऐसी जगह पे कभी लैंडिंग करना पड़े जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ पे क्लोरेला algae दिया जाता है, बिकॉज क्लोरेला algae के स्पैचेस छोटे छोटे पाउचेस में यूज़ किए जाते हैं उनको। आजकल क्लोरेला algae के कैप्सूल भी मिलते हैं मार्केट में, जिनको हम सिंगल सेल प्रोटीन SCP के नाम से पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, द गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। एडियंटम, मर्चेंशिया, पाइनस, पॉलीट्राइकम। So here I would say Pinus and no, Pinus is only the correct answer. Yes. So guys, here we have completed our test and this is the result scorecard. हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हमने सही आंसर 20 में से 20 दिए, रॉन्ग आंसर एक भी नहीं दिया हुआ है, और टोटल टेस्ट को हमें 10 मिनट और 7 सेकंड लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जब भी वीडियो रिलीज़ हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कंपटीशन में, नीट की कंपटीशन में सबसे आगे बढ़ें। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना चाहते हो नीट पास करने के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो जाए थोड़ी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।